Okay, welcome back, friends. So, another topic of economic geography is related with agriculture. So, it talks about world agriculture typology of agricultural regions, and there is agricultural inputs and productivity. There are two topics which are mentioned in the syllabus of paper 1. Now, you should understand that this topic is one of the most important topic of economic geography related with agriculture, because if you prepare this topic well, so like for example, if I am preparing this topic, I will have this map with me, this diagram with me, and the 13 agricultural regions which have been given by Whittlesey. I will have an idea about what type of crops are being grown in them and related figures. If I just add with this topic what I am studying for the, in GS paper 1, there is a topic factors controlling distribution of industries, primary, secondary and tertiary. तो प्राइमरी सेक्टर में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं इंपॉर्टेंटली, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. ठीक है, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर हम पढ़ते हैं वहाँ पर बेसिकली इट इज़ मोर विथ रिस्पेक्ट टू द वेरियस क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न. इनफैक्ट पेपर 3 में तुम्हारा क्रॉपिंग पैटर्न भी है. ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे मैं अपनी क्लास में जीएस की करवाता हूँ, तो आई टेक अप द फूड क्रॉप्स एंड देयर क्रॉपिंग पैटर्न with respect to both world and India. Similarly, if you talk about commercial crops, their cropping pattern in world and India. तो अगर मैं यहाँ पर जो जीएस का जो एग्रीकल्चर हम पढ़ते हैं ये ऐड कर लें, तो हमें सेपरेटली वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब ये मैप मेरे पास है. इफ़ आई हैव दिस मैप विथ मी एंड आई ऑल्सो ऐड द एग्रीकल्चर what I will be studying as a part of optional paper 2, उसमें we will be studying the concept of agricultural intensity, what is agricultural productivity, efficiency, सब concepts वहाँ पर भी पढ़ते हैं. तो वो जो conceptualization है वहाँ से उठा लिया मैंने concepts को और इसको सुपर इम्पोज कर दिया, मिक्स कर दिया इसके साथ with this. Then I will be in a position to even answer the questions which will be asked with respect to agricultural intensity and productivity in the world. ठीक है, so for example, अगर suppose करो कि मुझे क्वेश्चन लिखना है on the pattern of agricultural intensity और pattern of agricultural productivity found in the world. ठीक है, क्या मैं इन 13 regions को डिवाइड कर सकता हूँ on the basis of low agricultural intensity or low agricultural productivity, on the basis of medium agricultural intensity and productivity, and high agricultural intensity and productivity. So this map again I can use for the high, medium and low intensity or productivity of the agriculture. ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, that is very very crucial to dealing with the topics of agricultural geography in paper 1. ठीक है, आई होप यू गेट माय पॉइंट. ठीक है, देखो होता यह है कि syllabus of geography is quite vast, there is no doubt about that. So we will have to choose कि कहाँ पर हम स्मार्ट वर्क से एक अच्छा रिजल्ट अटेन कर सकते हैं एंड कहाँ पर हमें सेपरेटली उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. If we think about preparing every topic in so much detail, then it will be difficult to complete all of it in time. ठीक है, so that is the reason. Suppose एक क्वेश्चन आया था पास्ट में, just look into this. अभी इसमें होना चाहिए, इट वॉज देयर.
So it was related with coffee production in the world. ठीक है. तो सपोज मैंने उसको डायरेक्टली तैयार नहीं भी किया था अबाउट द कॉफी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, तो आई वुड हैव स्टडीड द क्रॉपिंग पैटर्न, जो जीएस में हम पढ़ते हैं क्रॉपिंग पैटर्न. यहाँ पर आई वुड हैव एसेंशली स्टडीड दैट कि व्हाट आर द फिजिकल या फिर व्हाट वी कॉल इट एज द एग्रो climatic factors which are required for the production of coffee. I would also study the, if you talk about infrastructural factors which are required for production of coffee, and what are essentially the institutional factors which are required for the production of coffee. क्योंकि हम एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न को इन्हीं 3 हेड्स में पढ़ते हैं. ठीक है. So what I would have studied the points there, I can use the same points and I can take here, like for example, here you will be finding there is one this one, 7th, tropical agriculture chiefly plantation. ठीक है. So I would know plantation areas कौन से हैं, and those would be the areas where I will be maybe making in the map where there is production of coffee essentially taking place. ठीक है. Similarly sugar पे आया, again it is the same category where we'll be finding. So I can use this and I can write a satisfactory answer जिसमें मुझे आराम से 5 to 6 marks out of 10 मिल सकता. ठीक है. तो आई विल हैव टू चूज, जैसे क्रिकेट में होता है कि कौन सी बॉल पे 6 लगाना है, 4 लगाना है, कौन सी बॉल पे सिंगल्स एंड डबल्स निकालना है. ठीक है. सो सेम विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स ऑल्सो यू हैव टू डू, बिकॉज अगर मैं इस एग्रीकल्चर कायदे से, तो मुझे क्या करना चाहिए, पूरा एग्रीकल्चर आई हैव टू प्रिपेयर ऑल द मेजर क्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड ऑल्सो, आई हैव टू एसेंशियली प्रिपेयर. ठीक है. बट हम उसको कर ही रहे हैं, वी आर डूइंग दैट इन द जीएस ऑफ एग्रीकल्चर. जस्ट यू हैव टू यूज द नॉलेज दैट यू हैव गेन देयर एंड राइट इट हियर, और ये हम फटाफट इसको कर सकते हैं. ठीक है. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, I'll give you 2 minutes. Critically examine the parameters. This is also previous year question. Critically examine the parameters used by Whittlesey in delineation of agricultural typology of the world. रहने दो.
Okay. So the question is saying critically examine. What we have to examine? The parameters which are used by Whittlesey in delineation of agricultural typology of the world. That means, which is our primary keyword? The primary keyword is the parameters. यानी कि जो हमारे पैराग्राफ्स की हेडिंग्स होंगी, दे विल बी दीज पैरामीटर्स विच हैव बीन एसेंशियली यूज्ड. ठीक है. एंड विद इन दैट क्रिटिकली एग्जामिन इज द सेकेंडरी कीवर्ड. ठीक है. सो इट इज अ मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल क्वेश्चन, जिसका कंटेम्प्रेरी से अगर हम देखें, जोड़ करके देखें, तो बहुत ज़्यादा इट इज़ नॉट टू मच. तो while I am writing this answer, I can start with an introduction which is a more based on the traditional lines. A more conceptual type of introduction can be used here. Like for example, I can say, Whittlesey using the partial chorology approach So if you have studied your perspectives, you must be aware partial chorology क्या होता है. So using the partial chorology approach, in fact the same partial chorology approach 1950s में he developed it as the Compage approach. ठीक है. So using the partial chorology approach developed the typology of agricultural regions. Then moving on to the main body. So coming to the main body. So what is essentially partial chorology? Chorology approach में क्या होता था? It was a very rigid type of approach in which all the elements of geography had to be combined together to identify the boundaries of the regions which were demarcated. This was a very cumbersome task for the geographers, and this was the reason why regional geography could not develop as chorology. It remained descriptive. So what Whittlesey tried to do, he tried to use a more partial chorology approach where the chorology principle will be there. Chorology principle क्या था? Interlinkages. Developing those interlinkages, that will be there. But the parameters that should be chosen, those parameters were to be chosen according to the need. ठीक है. It was not rigid to choose all the parameters according to the purpose in hand. So same thing what he has done, he has used here while developing his typology of agriculture. Okay. So I can further continue and say that he, instead of using all the rigid and exhaustive criteria for regionalization, preferred to select few human-based criteria to develop his typology of agricultural regions. ठीक है. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. And then I'll start writing and I'll say, Whittlesey agreed
that agriculture is outcome of interplay between physical and human factors. To stop. Yet, for the purpose of simplicity, he chose to adopt or use only human criteria. Chose to adopt only human criteria. तो इसका advantage क्या है? Can we say the advantage of this was that it became more simple? This was essentially the advantage. But what is the disadvantage of such classification? The disadvantage is that the picture presented is highly या फिर overly simplified. Overly simplified. For example, if I take the example so you can see here very clearly like अगर मैं इसको ले लूँ इंडिया को, तो इंडिया में कैन यू सी दिस 9 कैटेगरी 9, इट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग चीफली व्हीट एंड अदर क्रॉप्स. ठीक है, कैन यू सी दैट ही हैज पुट द एंटायर इंडिया, पाकिस्तान and all these areas under category 9? Yes or no? Because he has done what? He has neglected the role played by the physical factors. Can we say the western part of this region is essentially a desert? Yes or no? And in the desert, there is scarcity of resources. And under such scarcity of resources, can we say such kind of intensive subsistence farming is not possible? ठीक है, सो वी कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर जो पॉइंट लिखते जा रहे हैं उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों चीजें लिखते जाओ. ठीक है, तो हमने सबसे पहले ब्रॉड जो उसने एक क्राइटेरिया जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है उससे स्टार्ट करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द 5 क्राइटेरियाज व्हिच ही हैज टेकन आउट. ठीक है, सो हियर वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इट इज हाईली सिंप्लीफाइड. यू टॉक अबाउट द इंटेंसिव subsistence cultivation example of India. ठीक है, so that is one. Then moving on, while choosing the human criteria, he has neglected several human factors or variables which also play important role in determining agricultural operations. Like for example, which are the 5 criteria he is choosing? He is choosing the 5 criteria of crop and livestock association, the methods used to grow crop, produce the stock, intensity of application of land and of labor capital organization,
disposal of products for consumption, the ensemble of structures used to house facilities and farming होगा ये farming operations. ठीक है. So all these he has used, but can we say he could have added some other factors? Like for example, can we say he could have also added the political economy of the region? This is also, does this play an important role? Like for example, if you take the case of China, in China the agriculture is designed on the basis of which type of agriculture? Cooperative agriculture. ठीक है. They have developed what? They have developed commune system. This is referred to as a commune system of agriculture. As a result, can we say we face a dilemma of placing Chinese agriculture in which of these categories? Today, the Chinese agriculture doesn't fit in any of the categories given by Whittlesey, because it is not that kind of subsistence intensive cultivation with rice dominance which he is putting it into. It has become what? It has become more commercial type of agriculture. Okay. So again, that is the case. He has also neglected some other variables, like for example, if you talk about culture, like if you look into India, eastern and southern India, can we say culture is also oriented towards production of rice? Okay. So that is also one important factor which has been neglected by Whittlesey. So our second point where we are saying, पहले हमने क्या बोला कि पहली बात तो फिजिकल और ह्यूमन होता है, उसने केवल क्या लिया? ह्यूमन में भी उसने क्या किया कि rather than using variety of factors, he has just used 5 factors. ठीक है. Then we can move on to the criteria which he has chosen. So first criteria is the crop and livestock association. So if you talk about the crop and livestock association, इसका फायदा क्या है? Crop and livestock association, can we say crop, basically agriculture की अगर हम बात करें तो he has been able to deal agriculture in more comprehensive manner rather than narrowly treating agriculture as just cropping. ठीक है. So this is the benefit, this is the advantage part. So he has taken the definition of agriculture as more comprehensive, not just cropping. And thus you can give examples of various associations that he has talked about, the crop and livestock associations which he has essentially talked about. ठीक है. So this is again what a advantage. But the thing is, can we say that when we are talking about the crop and livestock association, the type of crops grown, and the role of livestock or the share of livestock, it is essentially what? It is a very highly dynamic factor. It is a dynamic factor which can change with time, which is changing with time depending upon several socio-economic variables. And number of examples can be seen. Like for example, take the case of Punjab. He has classified Punjab under intensive
subsistence cultivation without rice dominance. सॉरी, मैं पंजाब लिख दिया हूँ गलती से. It is essentially central India. So intensive subsistence cultivation without rice dominance के अंदर आता है. तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? We find that intensive subsistence cultivation without rice dominance में other type of grains are more important, like wheat and millets tend to be very important, and there is little role, if you talk about, which is being played by the livestock. ठीक है. बट अगर मैं देखूं पंजाब में भी, सेंट्रल इंडिया में भी, कैन वी से कि गुजरात इज अनदर गुड एग्जाम्पल. विथ द वाइट रेवोल्यूशन taking place, what has happened? Can we say that the share, if you talk about, of the livestock in cultivation, it has increased? ठीक है. So it is what the criteria he has taken is correct, but the problem is that it is a very dynamic criteria, and his model, it is very rigid. ठीक है. So again we can write about this. Then the second thing he has chosen is the methods used to grow crops. So methods used to grow crops. So you know, methods used to grow crops में basically क्या होता है? It is the technology which is used. ठीक है. So it is essentially related with the technology which is essentially used to grow the crops. And if you talk about this, can we say this is also a very, very dynamic phenomenon? Technology, there is diffusion of technology. Diffusion of technology, and because of the diffusion of technology, what will happen? Technology also keeps on changing. So if we talk about today, like for example western India की अगर हम बात करें, तो it is kept under intensive subsistence cultivation without rice dominance. और intensive subsistence cultivation की खास बात क्या होती है? Which methods are used? More traditional methods are used in that. But today, if we look into, can we say there is high commercialization, mechanization of agriculture has taken place? So with the diffusion of agricultural technology, what has happened? The methods have changed. And thus what we find, his classification has become irrelevant. ठीक है. क्या पंजाब को हम कह सकते हैं कि वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल? नहीं कह सकते. ठीक है. It has become more an example of commercial agriculture. Similarly, third criteria he is using is intensity of agriculture. Intensity of agriculture. And if you talk about intensity of agriculture also depends upon several socio-economic factors. ठीक है. So it is also function of several socio-economic factors, and these socio-economic factors are variable over time. You can take example of green revolution in India and other developing countries. Take the example of China. So China, through its commune system of agriculture, what it was able to do? It was able to increase the intensity of agriculture. How? By using
HYV seeds, and when you are using HYV seeds, they will be successful only when there is intensive application of fertilizers. When there is, you are using so much of fertilizer, ये fertilizers chemical fertilizers होते हैं, so they are concentrated form में होते हैं, तो definitely to dilute them you will also require huge amount of water. ठीक है, so assured irrigation चाहिए तुम्हें. Now when you are using so much fertilizer, so much water, that means you have created an environment which is very conducive for the growth of pests. That means you will be using also pesticides. Very clearly, if you talk about, because you are using HYV seeds which are short maturing, and the benefit of this short maturing seeds can be only utilized when you are able to finish the agricultural operations fast. ठीक है, तो अगर वो फास्ट करना है तो कैन वी से देयर विल बी रोल ऑफ मैकेनाइजेशन एज वेल. ठीक है, तो व्हाट हैज हैपेंड ultimately, because of this we find that again these countries, the intensity of agriculture has again differed. So again they don't fit in the criteria of Whittlesey, the criteria which he has essentially given. Then disposal of products for consumption. Disposal of products for consumption. So tell me, can we say disposal of products for consumption, it is essentially function of the surplus generated in the agricultural operation? So it is function of the surplus generated. And tell me, surplus in turn is function of what? Is it function of the method plus intensity? उसी का function है. So if method and intensity are changing, what will happen? The surplus will also change. And if surplus is essentially changing, definitely what will happen? The case of India is very good example. Western Uttar Pradesh, very, very good example. Earlier, mostly it was what? Subsistence agriculture. But as the method and intensity change, now it has become more market oriented agriculture. Okay, so again it doesn't fit in the classification which is presented by Whittlesey. Okay, then fifth is the infrastructure point, infrastructure and institutions which are there. He has taken this criteria of infrastructure and institutions, or the ensemble of structures which are essentially used. So again, if you talk about infrastructure and institution, they also change with the method, intensity and surplus of agriculture. They will also change over a period of time. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसको हम एक कंक्लूड कर सकते हैं इन पांचों पॉइंट का. व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज Whittlesey gave his classification in a context. ठीक है, and what was the context at that time? At that time the context was that the mobility in the world was limited. ठीक है, we were not still in a globalized world. But what has essentially happened after the Second World War? Can we say interaction in the world has increased? ठीक है, since 1970 this interaction has become very intense and there is now globalization, as a result of which what is happening, diffusion of the agricultural ideas, technologies, it is taking place at a very fast rate, and thus what is happening, the agriculture
is changing at very fast rate. And as a result of which, definitely we can say that in that context, if you look in a more static world, his criterias were fine and his typology was fine. Today, if we look into, अगर हम देखें तो ये जो 13 क्राइटेरिया, 13 रीजन जो 13 रीजन दिए हुए हैं, इसमें अगर हम कमर्शियल वाले लें तो ठीक है, दे आर फाइन. वेरी प्रिमिटिव इफ वी टेक सबसिस्टेंस टाइप, दैट इज ऑल्सो फाइन. ठीक है, नहीं सबसिस्टेंस बोल रहा हूं, अदर्स लाइक झूम कल्टिवेशन एंड ऑल. ठीक है, वेरी प्रिमिटिव वी आर टेकिंग, देयर ऑल्सो वी स्टिल फाइंड दैट नॉट मच हैज चेंज. बट व्हाट इज हैपनिंग विथ द अदर टाइप ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, लाइक इसमें अगर मैं देखूं तो देयर इज subsistence crop and livestock farming, one criteria. If you talk about there is intensive subsistence farming, chiefly rice, intensive subsistence farming, chiefly wheat and other crops, rudimentary sedentary cultivation. ठीक है, and if you talk about nomadic and semi nomadic herding, all of these are present where? In the developing countries. And in all of these, what we find, agriculture is found to be in transition phase rather than the types he has defined. They cannot be classified in. Take the example, nomadic and semi-nomadic herding. Like for example, Central Asian region, जो ये पूरा Central Asia वाला region है, it is classified under this category. ठीक है. Can you imagine, अभी जाकर के वहां के लोगों को बोलोगे सेंट्रल एशिया के कि यू पीपल आर नोमैड्स, दे लाफ ऑन यू. देयर सिविलाइजेशन हैज बिकम एक्चुअली मोर एडवांस्ड बिकॉज ऑफ बीइंग नियर टू यूरोप. ठीक है, बिकॉज ऑफ बीइंग कॉलोनाइज्ड बाय रशिया. तो वो सब खत्म हो गया. सो दैट इज द प्रॉब्लम. द क्राइटेरिया ही हैज चोजन, दे वर क्राइटेरिया चोजन इन सर्टेन कंटेक्स्ट. But today those criteria, they have acquired different meaning in a globalized world, and thus it is difficult to demarcate, or thus the world areas do not fit in the types defined by Whittlesey. ठीक है, so that is how this answer should have been written. Moving on. Examine the role of diffusion of agricultural innovation in development pattern of agriculture across the world. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिफ्यूजन के ऊपर है. तो इसके लिए मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए. अब इसमें कीवर्ड यूज हुआ है डिफ्यूजन. ठीक है, सो वी शुड नो व्हाट इज एसेंशियली डिफ्यूजन. एंड डिफ्यूजन जब हम बात करते हैं तो कुछ कंसेप्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो पता होने चाहिए. लाइक वन कंसेप्ट इज दैट ऑफ अर्थ. ठीक है, अर्थ क्या होता है? अर्थ इज अ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर. तो दैट इज वन थिंग. डिफ्यूजन की ओर बात करते हैं तो डिफ्यूजन कैन बी ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन कैन बी देयर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कंटेजियस डिफ्यूजन. One type of diffusion is the hierarchical diffusion. ठीक है, ये पहली कैटेगरी जो होती है कॉन्टैक्ट डिफ्यूजन होता है, ये होता है रीलोकेशन डिफ्यूजन. तो कॉन्टैक्ट डिफ्यूजन में दो कंटेजियस एंड हायरार्किकल डिफ्यूजन आते हैं, एंड रीलोकेशन डिफ्यूजन में माइग्रेशन डिफ्यूजन and if you talk about, there is missionary diffusion.
सो ये चारों टर्म्स मुझे अच्छे से पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि हर्थ, व्हाट इज एसेंशियली द कंसेप्ट ऑफ हर्थ एज वेल। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम इस आंसर को एसेंशियली लिख सकते हैं। दिस आंसर विल बी ऑल अबाउट यूजिंग दिस आइडियाज, यूजिंग द आइडिया ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो I would say that the contemporary pattern of world agriculture is outcome of development of agricultural technologies in agricultural herds and their diffusion in time and space. In time and space. Then the main body, I would say it is the nature of information and technologies to spread or diffuse slowly or gradually in space over time through various forms such as contagion, hierarchical, migratory, and missionary diffusion processes. डिफ्यूजन प्रोसेसेस। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एग्जाम्पल्स लेने हैं और बताते रहना है इन्हीं टर्म्स को बार बार यूज करके कि हाउ एसेंशियली द डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, सो अगर हम स्टार्ट करें तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी देयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द केस ऑफ एंग्लो अमेरिका, एंग्लो अमेरिका, ठीक है, और एंग्लो अमेरिका में अगर हम देखें तो यूएसए, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चरल रीजन्स पढ़े थे। कैन आई यूज दैट मैप हियर? ठीक है, so that map can be drawn here and I can talk about today. If we look into America, what we find, do we find one number of things like there is grain farming like corn. If you talk about wheat, particularly wheat farming is a very dominant activity, very important activity in the prairie region of America. ठीक है, also there is a belt of dairy. Now if we look particularly in case of wheat, even corn and dairy, particularly wheat and dairy, you will be finding that in the past America region was basically a pasture land. ठीक है, it was basically a pastoralist land. So who has brought this type of agriculture and the related technology? It was result of migration diffusion. ठीक है,
So it was brought into this area by the phenomena of migration diffusion, which was done by the European. Europeans. ठीक है. So we can talk about that. और migration diffusion के examples हो सकते हैं. Like for example, take the case of Argentina and Uruguay. Argentina and Uruguay, they are very important producer of beef, beef cattle in the world. ठीक है. So what were, how this has happened essentially, because you know South America is one of the biogeographic regions where you do not find hoofed mammals in wild. Hoofed mammals कौन से होते हैं? जो toes पे चलते हैं. So in wild you don't find hoofed mammals in South America. So essentially it was the cattle that we find today. It was brought from where? It was brought from Europe. In fact, if you talk about another example is the case of the prairie grasses which are there. In case of Argentina and Uruguay, the pampas grasses, if you talk about, the pampas grasses were not so much nutritious naturally. So what they did, they replaced these grasses with a grass brought from Europe, that is alfalfa. ठीक है. इनफैक्ट एक नाम इसमें लिखना है तो एबरदीन कैटल वाज ब्रॉट. ठीक है. सो हमने माइग्रेशन डिफ्यूजन पे कुछ एग्जांपल्स लिख डाले. सिमिलरली if you talk about, we can also talk about the missionary diffusion. Very good example of missionary diffusion is the case of cultivation of coffee in South India. हिस्ट्री में पढ़ा होगा. Who brought coffee in South India? It was Baba Budan, who was essentially a missionary. ठीक है. And after that what happened? It became a very important hub of coffee production. ठीक है. So I can write about here. Then if you talk about an example of hierarchical diffusion, और hierarchical diffusion प्लस अगर मुझे लिखना है कंटेजियन डिफ्यूजन का भी, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हमने पढ़ रखा होगा, इट इज, यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया. सो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, डिफ्यूजन थ्योरी क्या कहती है कि डिफ्यूजन ऐसे होता है always, this is the time, this is the rate of diffusion. So essentially it always happens in these three stages. ठीक है. और इनिशियली क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में the diffusion will be limited to some clusters in space. Then later new spatial clusters will develop. This is how
the diffusion always occurs in space. Now, if we look into this, if we apply this in the case of spread of green revolution in India, we find a very similar pattern is found. ठीक है. So spread of green revolution कब से start होता है? 1966, 67 से start हो जाता है. ठीक है. And it was in wheat. It was brought from where? Can we say it was developed in Mexico, which became the hearth of HIV, wheat. ठीक है. And in the first phase, which was between 1966 से 67 till if you talk about 1977-78, ठीक है. It was limited to which area? अगर मैं बात करूं फर्स्ट फेज में, तो can we say initially it was limited to this region? ठीक है. Can we say the choice of this region was an example of hierarchical diffusion process? गवर्नमेंट ने पेपर पे तो बोला कि ग्रीन रेवोल्यूशन विल स्प्रेड एवरीवेयर, बट जो अरेंजमेंट्स किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, इट वाज मेनली वेयर? हियर. व्हाई? बिकॉज यहां पर डेवलप्ड कैनाल नेटवर्क्स थे. हियर देयर वाज प्रेजेंस ऑफ रिचर बिगर फार्मर्स. ठीक है. सो द कंसेंट्रेशन वाज हियर, एंड बिकॉज ऑफ हायरार्किकल डिफ्यूजन हमेशा फास्ट होता है, इसलिए यहां पर डिफ्यूजन बहुत फास्ट हुआ. ठीक है. सो दिस वाज द फेज 1. फिर जब हम सेकेंड फेज में जाते हैं, तो हियर इट वाज द व्हीट फेज, व्हीट रिवोल्यूशन फेज. देन सेकेंड इज 85-86 तक था, इट बिकेम द राइस रिवोल्यूशन फेज. व्हाट वाज द हर्थ where this HIV seeds of rice developed? It was Philippines, Manila. ठीक है. So again it diffused into India, and अब क्या हुआ? नए एरियाज जुड़ गए. एंड व्हीट रिवोल्यूशन क्या हुआ? इट through the phenomena of contagion diffusion, it spreaded to new areas. ठीक है. इट वॉज अगेन, ये जो स्प्रेड हुआ जोन से, कोर जोन से दूसरी आगे उसके बाहर, इट वॉज थ्रू कंटेजियन डिफ्यूजन. कंटेजियन डिफ्यूजन, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटेजियन डिफ्यूजन. When I come in contact with someone and I like his culture or his idea, I will also begin to follow that culture or idea. That is contagion diffusion. ठीक है. तो ये फेज 2 में होता है. देन फेज 3 में यहां से हमारा एक प्लानिंग वाटरशेड है, जहां से हमने ड्राई क्रॉपिंग की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया. ठीक है. सो हियर व्हाट हैपेंड, नंबर ऑफ crops came into that, yellow revolution हुआ, oil seeds आ गए in the ambit of green revolution. If you talk about others, like there was sugar cane revolution, there was also BT cotton revolution along the mid 90s. ठीक है. तो ये फेज एग्जिस्ट करता है अराउंड लेट 90s तक. और अगेन व्हाट हैपेंड इन दिस फेज, द न्यू एरियाज, ये और भी बढ़ गया. अब ये थर्ड फेज में नए एरियाज में पहुंच गया कंटेजियन डिफ्यूजन के थ्रू. ठीक है. एंड सम अदर्स इफ यू टॉक अबाउट वर अफेक्टेड.
because of such kind of revolution. Either be what happened, this राइस वाले एरियाज भी कंटेजियन डिफ्यूजन के थ्रू दे ऑल्सो एक्सपांडेड. सो कैन वी फाइंड वन कॉमन थिंग हियर एंड हियर इन दिस मैप? ये जो मैप है और ये जो डायग्राम है, इज देयर सिमिलैरिटी? Obviously there is. Here also we can say that diffusion was not complete in space. Can we see here also the diffusion is not complete in space? ठीक है. So again we can use the case study of green revolution spread in India and we can again write the last part में उसको अच्छे से लिख सकते हैं. Question number 15. Climate change will disrupt food production and will lead to increased frequency and intensity of famines. Discuss. I'll give you 2 minutes. No path, it is not important for GS. This is core optional we are talking about. Okay, so this is the topic of food and nutrition problems, food security, famine, causes, effects, and remedies. This is again mentioned in our syllabus. As you know that this year there, last year, sorry, since last year this problem is there. Madagascar experience is what is said to be the first climate change induced drought and famine. ठीक है. And we know that already the temperatures are rising very fast. So definitely we expect that the problem is going to accelerate for many of the developing countries. इस साल because there is El Nino and because of El Nino there will be change in the precipitation patterns. ठीक है. And many areas will be facing drought conditions. So because of that again there is a chance that a question can be asked from here also. ठीक है.
अब इसमें पहला ही क्वेश्चन हमारा है, क्लाइमेट चेंज विल डिसरप्ट द फूड प्रोडक्शन एंड विल लीड टू इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ फेमाइंस, डिस्कस। अब यहां पर आंसर जब हम लिखने स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी आर स्टार्टिंग टू राइट द आंसर, if I have my concepts clear with respect to what is famine and what are the causes of famine, ठीक है, then what will happen, I will be in a better position to write this answer and actually plan the answer and write accordingly, ठीक है। बिकॉज यहां पर क्या है, डिस्कस, और जब हम डिस्कस करते हैं तो 60% हम फेवर में लिखते हैं एंड एटलीस्ट 30 to 40% हमें अगेंस्ट भी लिखना होता है, ठीक है। सो सबसे पहली बात, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एसेंशियली अ फेमाइन। कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? देखो, दिस इज व्हाट हैपन्स, ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं एंड अभी एग्जाम में आ जाएगा। एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग दैट यू एटलीस्ट नो द डेफिनेशन एंड यू आर राइटिंग अ करेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। सो व्हाट एसेंशियली इज अ फेमाइन? फेमाइन इज अ सिचुएशन of food scarcity where the coping strategies begin to fail and is normally associated with increased mortality levels than it is found normally, ठीक है। So this such kind of situation is referred to as famine. अब जब मैं फेमाइन समझ रहा हूं तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि और भी कंसेप्ट होते हैं, रिलेटेड कंसेप्ट पता होने चाहिए। हंगर क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्टंटिंग, वेस्टिंग आर फॉर्म्स ऑफ हंगर, ठीक है। व्हाट इज फूड इनसिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब मुझे पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है एक चार्ट में, you see, for example, when we are talking about food security, the mortality rate is, we are talking about per lakh, it is less than 0.2 and wasting is less than 2.3. Social systems are cohesive, prices are stable and coping strategies are not needed at that point of time. फिर क्या होता है, अगर फूड इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है तो ये बढ़ जाएगा, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज एंड सोशल सिस्टम अभी भी कोहेसिव है बट प्राइस इंस्टेबिलिटी हैज crept in. Still, if you talk about some coping strategies are used, then it can develop into food crisis, it can develop into then famine, it can become severe famines and it can become extreme famines, ठीक है। So that is first thing about famines. Now about famine, when we are talking about, very important thing to understand that how famines occur, what are the causes of famine, there are डिफरेंट व्यूज रिलेटेड विद दैट। और ये जो डिफरेंट व्यूज हैं, अगेन कौन सा है हमारा जो इक्वेशन था, आई इज इक्वल टू पैट, ठीक है। सो इफ फेमाइंस आर अकरिंग इन एन एरिया, इट कैन बी आउटकम ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज मच हायर than food increase rate. This idea is whose idea? It is Malthusian. So famine is basically what? According to Malthus, famine is essentially a positive check. ठीक है। Then there is this affluence levels. एंड दिस अप्रोच इन टर्म्स ऑफ फेमाइन, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच।
तो इसमें the Marxist approach is there. More recently, the approaches which has been used by Amartya Sen, for example, they are there. Okay, and third is the role of technology. Okay, so the technocentric view. For example, tell me, अफ्रीका में फेमाइंस ज्यादा अकर होते हैं आज के टाइम में, ठीक है. कैन वी से कि एक रीजन अफ्रीका में फेमाइंस अकर होने का यह भी है, इट इज रिलेटेड विथ द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. इफ वी लुक इनटू द HIV सीड्स, can we say HIV seeds have primarily been developed in cereals? Yes or no? Or Africa mein, if you talk about, can we say the cereals in which HIV seeds have grown, they are not the primary crops of Africa? Yes or no? जो अफ्रीका के क्रॉप्स हैं उसमें HIV टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है. So if there is food scarcity in Africa, can we say technology also plays a role? ठीक है. So always when you are thinking about food security, about famines, you always think from the perspective of I is equal to PAT. इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? In this question it is implicating climate change for increase in the famines. Can we say कि even if suppose there is climate change, इंडिया में अगर हम देखें तो पहले बहुत फेमाइंस होते थे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्टीमेटली फॉर्म्ड, अल्टीमेटली वी स्टार्टेड टू इंपोर्ट wheat from US under the PL40 program. Later we also developed our green revolution. ब्रिटिश के ही टाइम से एक मैकेनिज्म था, उसको हमने और फोर्टिफाई कर दिया, एंड दिस वाज द PDS मैकेनिज्म, ठीक है. तो सिंस देन कैन वी से कि फेमाइंस इंडिया में बहुत कम हो गए? यस और नो? इट इज डिस्पाइट द फैक्ट कि ड्रॉट्स होते रहे, फ्लड्स आते रहे. यस और नो? So one of very important view about the famines is that famines occur in basically when there is a kind of politico-economic system, politico-economic structures which are vulnerable to famines already. There is vulnerability. ठीक है? These events are essentially what? They are just trigger events which trigger the famines. सो अब जब मैं इस चीज को समझ रहा हूं, कैन आई से मेरा आंसर लिखने का तरीका बदल जाएगा. आई विल जस्टिफाई हाउ क्लाइमेट चेंज विल लीड टू इंक्रीज इन फेमाइंस, बट कैन आई से वो मेरी मेन बॉडी का 60% ऑफ द आंसर ही होगा. एटलीस्ट 20% आई शुड राइट अबाउट द पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स, एटलीस्ट 20% शुड आई राइट अबाउट द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है. देन ओनली माई आंसर विल बी एसेंशियली कंप्लीट. ओके, सो इसमें मैंने ये क्लाइमेट चेंज वाला दे दिया है, इसको एक बार पढ़ लेना. सो इट टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ फैक्टर्स, कैसे क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन थ्रू वेरियस वेज, हाउ हायर टेम्परेचर, वाटर स्कार्सिटी, ग्रेटर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर, एक्सट्रीम इवेंट्स, they will lead to the changes in the availability of crops. Also how diseases will be growing, water resource decline, ठीक है, सब दिया हुआ उसमें एग्जाम्पल. देन others like how it would impact food access to food, how it will impact nutrition which is also part of the food security, ठीक है. So सबको शॉर्ट में करके you just write the first part. Then moving on to the second part, there we will talk about this thing, that it is very important to understand. So we can write something like this: despite implicating climate change as
a cause of likely increase in the famines in future, comma, it has to be understood that physical factors work as trigger events in bringing famine. However, there are more deeper reasons or deeper factors which are more fundamental cause of famines, which are more fundamental causes of famines. Then I can talk about ये MJ Watt का मॉडल है which talks about how the famines are occurring. So according to him, famines will occur when you create this space. What is this space? This is space of vulnerability. ठीक है? And there are three factors. One is related with entitlement, one is related with empowerment, and third factor is related with political economy. So as you move, as entitlement is reduced, as empowerment of the population is reduced, as political economy factors become unfavorable, then what is created? There is creation of this space of vulnerability. Okay? And if this space of vulnerability exists and then the trigger events occur, then only the famines will be taking place. ठीक है? जैसे अभी हमने बात किया, इंडिया ने पीडीएस सिस्टम एंड अदर्स के थ्रू वो स्पेस ऑफ वल्नरेबिलिटी को क्या किया? कम कर दिया. एंड उसकी वजह से डिस्पाइट द फैक्ट दैट सेवरल ट्रिगर इवेंट्स हैव अकर्ड, but we have not faced so much severe famines like we faced in 40s Bengal famine. ठीक है? So why we were facing famines that time? Can we say because the political economy, if you talk about at that time, was colonial, it was exploitative in nature. ठीक है? Similarly, entitlement की बात करें, what is essentially entitlement? Entitlement is related with the ownership of resources. Entitlement का मतलब क्या है? It is ownership of resources. So tell me, can we say during the British period, one of the reasons of occurrence of famines more regularly was also the creation of feudalistic systems? Yes or no? That was also one of the basic reasons. Entitlement was taken away from the people. And that was also one of the factors which led to increased frequency and intensity of famines during that period. Okay? Similarly, if you talk about empowerment. So empowerment, maybe it is related with what? It is related with the rights. Okay? The human rights, the rights that the people have. In a system like India, can we say, which is the society where it is divided into strata on the basis of caste, can we say there are few privileged who have empowerment, better empowerment than the others? ठीक है?
So again, what happens? There is creation of this. As you go away from these, there will be a space of vulnerability created. And then only what will happen? There will be famines. अब अफ्रीका का केस लें, it is expected that maximum famines will be occurring in Africa. Can we say in Africa, when you are talking about entitlement, there is presence of which type of regimes? Authoritarian regimes are present. There is lack of democracy in Africa. So political economy, if you talk about, it is not favorable. ठीक है. There also feudalistic systems have grown. If you talk about empowerment, people are uneducated. There are tribal wars taking on. There is lots of uncertainty. So already Africa, if you talk about, is already in a situation of vulnerability. And if such event occurs, then what will happen? There is no doubt that there will be famines, more and more famines taking place. Can we cite the example or case study of Madagascar here? It is a similar thing. ठीक है. So that is one thing I'll talk about. फिर उसके बाद मैं भूलूंगा नहीं कि एक तीसरा भी फैक्टर है टेक्नोलॉजी का. ठीक है, कम से कम एक पैराग्राफ उस पर भी लिखना है. और जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, सीरियल्स, ठीक है, डेफिनेटली वी कैन राइट दैट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई देर इज फूड्स इनसिक्योरिटी इन केस ऑफ अफ्रीका. ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया. अभी सऊदी अरेबिया ने क्या किया? दे हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट एंड वेरी लार्ज स्केल. And this year it is expected that they will be hardly importing wheat because they have produced so much of wheat. So what they did, they changed the technology. So that is how the answer should be written. Then give an account of food security issues in the developing countries. अब food security issues in the developing countries पूछा है, तो मैं इसमें framework ले सकता हूं. Can I take the framework of Latin America, अफ्रीका एंड एशिया? ठीक है, उसको भी अगर मैं चाहूं तो रीजन्स में डिवाइड कर सकता हूं. ठीक है, आई कैन टेक द केस ऑफ लैटिन अमेरिका. आई कैन टेक लाइक फॉर एग्जांपल सब सहारन अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट एक रीजन हो गया. ठीक है, सेंट्रल एशिया, इट विल बिकम अनदर रीजन. साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एक साथ कर लो. ठीक है, तो इस तरह से मैंने रीजनल ग्रुपिंग्स बना ली और हर रीजनल ग्रुपिंग की स्टोरी जो होगी फूड सिक्योरिटी की वो अलग होगी. ठीक है, सो इफ आई जस्ट टेक फ्यू एग्जांपल्स, इफ आई टॉक अबाउट ईस्ट एशिया एज अ ग्रुप, so what has been the situation in East Asia? Can we say there is more positive signs? Yes or no? यहां पे पॉजिटिव साइंस है. Why there are positive signs? अगेन मुझे अगर लिखना है तो I is equal to that. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा है यहां पर? इट इज T, that is technology. So if you talk about through the system of the HYV seeds, what they have done, they have spread the green revolution very evenly. ठीक है, और इसमें ए का भी फैक्टर रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमी एफ्लुएंस वाला फैक्टर. कैन वी से इन्होंने क्या किया? चाइना में कम्यून सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलप किया है. मार्क्स, अभी हम जो बात कर रहे थे लैंड रेंट की, मार्क्स क्या क्रिटिसाइज करता है? What was done in Europe, what they did, they gave this ownership to few individuals. Marx says the same benefit of the feudal system can be obtained without giving ownership to few individuals. You can do what? You can combine these farms in cooperative fashion and you can do cooperative farming. और cooperative farming में क्या होगा?
फील्ड का साइज बड़ा हो गया, ठीक है, एंड अगर फील्ड का साइज बड़ा हो गया तो यू कैन यूज इंटेंसिटी ऑफ इनपुट्स, you can use mechanization, you can achieve the same benefits. Here what will happen, inequality will not be the case because the profits will be going to the actual owners of the farm. ठीक है, so a similar type of system was used there. In fact, tell me, if you take the case of China, did China was it able to strictly implement its one child policy and control the population growth? So if you look into East Asia, we find that there are positive signs. Similarly, अगर मुझे साउथ एशिया की बात करनी है, साउथ एशिया हो गया, टेल मी, कैन वी से देयर आर मिक्स्ड साइंस इन साउथ एशिया? ठीक है, हियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रॉस्पेरस रीजन्स वेयर देयर इज इनफ फूड सिक्योरिटी, ऑल्सो देयर इज व्हाट, there is areas where there is high food insecurity. ठीक है, इंडिया का केस लेकर के समझा सकते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है? अभी हमने देखा था जो टेक्नोलॉजी का स्प्रेड था, was it in a similar manner, was it uneven? ठीक है, so it was essentially uneven. Similarly, if you talk about here other factors, here there is more market economy, and market economy caters only where there is more profit. ठीक है, so again that is one of the issues which is there. Population size अगर हम बात करें, India has been able to control its population to some extent, but can we say it has still grown? ठीक है, it was not as efficient as the case of China because India, हमारी बातें हैं, we have democracy, so etc etc, but whatever. So here what is happening, there is mixed scenario. अगर मैं अफ्रीका के बारे में लिख रहा हूं, like for example I am talking about sub-Saharan Africa. So can we say in sub-Saharan Africa, I can say there is a grim prognosis. Again reason same है. अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करें, मोर और लेस सेम है. पाकिस्तान में भी इफ यू गो टुवर्ड्स द ट्राइबल प्रोविंसेस, you will be finding that there is the food security is not up to the level. Punjab part of Pakistan is different, ठीक है, and rest of the Pakistan is different. So same thing India में भी. बहुत सारी चीजें जो हम लर्न करते हैं, दे आर लाइक वी हैव बीन फेड बाय द मीडिया. Now, in case of basmati rice, Pakistan, if you talk about, is a very, very big producer, competitor of India. Same is the case of wheat, same is the case of cotton. In fact, in cotton, if you talk about in terms of productivity, Pakistan has overtaken. ठीक है, इंडिया में बड़ा है, बीटी कॉटन आ गया है, अभी वो रिसेंट की बात है, ठीक है, बट क्वालिटी ऑफ कॉटन की बात करो, पाकिस्तान इज बेटर प्रोड्यूसर. इन पंजाब देयर आर मैकेनाइज्ड फार्म्स. फिर से मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो उसका पंजाब पाकिस्तान है, इट इज डिफरेंट एंड रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान इज डिफरेंट. तो इंडिया वही बड़े स्केल पे हो जाता है, पाकिस्तान वही छोटे स्केल पर, जो डिफरेंसेस. तो द सिनेरियो इज नॉट वेरी डिफरेंट. नो डाउट इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं. ओके, सो अगेन विल टॉक अबाउट द ग्रिम प्रोग्नोसिस. अभी हमने देखा अफ्रीका में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, विच वी कैन इंक्लूड हियर. वी विल सी दैट इन अफ्रीका, सब साहारन अफ्रीका, द TFR लेवल्स आर स्टिल ओवर 4. ठीक है,
और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब साहारन अफ्रीका में एक और प्रॉब्लम हो रहा है, देयर इज मोर्टालिटी रिवर्सल टेकिंग प्लेस। मोर्टालिटी रिवर्सल क्या होता है कि नॉर्मली अगर सपोज देयर इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑन गोइंग इन अ कंट्री, ठीक है, तो जो मोर्टालिटी होता है इट बिगिंस टू डिक्लाइन, एंड वंस इट बिगिंस टू डिक्लाइन इट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। दिस इज हाउ द ट्रांजिशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो होता क्या है कि जब लोगों को पता चल जाता है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे विल प्रोड्यूस, मोस्ट ऑफ देम विल सर्वाइव, ठीक है, then they begin to realize कि it is better to have less children because otherwise they will become burden। ठीक है, so that means फर्टिलिटी ट्रांजिशन तभी स्टार्ट होता है, फर्टिलिटी डिक्लाइन तभी स्टार्ट होता है जब मोर्टालिटी और फर्टिलिटी के बीच में एक बड़ा गैप डेवलप हो जाए। ठीक है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, द कंट्री विल रिमेन इन द सेकेंड स्टेज, एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेज। ठीक है, अफ्रीका में क्या हुआ है, इन अफ्रीका देयर इज मोर्टालिटी रिवर्सल, ये मोर्टालिटी डिक्लाइन रुक गया है बिकॉज ऑफ several reasons we will see in population geography. So if the mortality decline has stopped, that means can we say people will not be willing to reduce the fertility? And this means that if you talk about Africa, it will continue to remain in stage 2 of demographic transition for longer period of time. And this means that it will continue to add population. And it is expected, जो expected figures हैं, that Africa will become the second most populous continent in the world by the end of this century. And उसका जो population होगा, it can reach up to 3.9 billion if the situation is not controlled. ठीक है, so again in case of Africa there is grim prognosis, already population बढ़ रहा है, technology has not improved, and there are political instabilities. So there are problems with respect to on the food front. So that is the case. So यहाँ पर कुछ maps हैं which you can essentially use to talk about food insecurity of the countries. So like for example this global hunger index use कर सकते हो, या फिर food security index is there. So very clearly you can see that in the developing countries, if you talk about, you are finding that Africa is the area which has most negative environment with respect to food security. ठीक है, if you look into South America, there is overall good environment. South America की population कितनी है? It is still underpopulated. And if you talk about already उसका TFR, it has reached to around 2.2. तो उसका फर्टिलिटी ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा है, एंड इट विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन. इफ यू टॉक अबाउट, यू कैन वेरी क्लियरली सी साउथ एशिया इज वन एरिया वेयर देयर आर स्टिल प्रॉब्लम. ठीक है, सो इट इज मॉडरेट टाइप ऑफ एनवायरमेंट. जो हमने अभी मिक्स बोला, दैट इज मॉडरेट टाइप ऑफ एनवायरमेंट. सो वी कैन यूज दिस मैप and we can write the same stuff which we were talking about. It will come under technical. Okay, question number 17 पर आते हैं. It is also a traditional question. Discuss Weber's theory of industrial location and assess its relevance in the present day context. So frame your answer. You have got 2 minutes.
Okay. So now again see, there was this keyword discuss. ठीक है, तो ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब मेरे पास 4 पेज है। और अगर मैं मान लूं कि एक डिस्कस है, दूसरा असेस है, तो ये दोनों के दोनों कीवर्ड एक बराबर के, ठीक है, इसका मतलब 50% वेटेज फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड 50% वेटेज फॉर द सेकेंड पार्ट। दैट मीन 2 पेज में मुझे वेबर्स का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी खत्म करना है एंड उसका डिस्कशन का कुछ पार्ट भी, और जो उसका डिस्कशन होगा दैट मीन्स द क्रिटिसिज्म पार्ट, यू कैन यूज द स्पेस वेयर यू विल राइट द रेलेवेंस, वहां पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ एसेंशियली आई विल बी राइटिंग द आंसर। तो बहुत क्लियर है कि 2-2 पेज, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो क्या होता है कि सपोज आई एम फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, तो अगर ये 20 मार्क्स का है तो आई विल गिव, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं जो कॉपी चेकर्स होते हैं उनको बोलता हूं कि इफ इट इज अ 20 मार्क, आई एम गिविंग अराउंड 16 मार्क्स फॉर द कंटेंट। ठीक है, उसमें 4 मार्क्स फॉर अदर थिंग्स लाइक डायग्राम्स कैसा बनाया है, प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। तो ये जो 16 मार्क्स है, अब इस 16 मार्क्स में से 8 मार्क्स फॉर फर्स्ट पार्ट, 8 मार्क्स फॉर द सेकेंड पार्ट। नाउ थिंक व्हाट यू डिड, यू डिडंट कैलकुलेट दिस बिफोर कि किसको कितना परसेंटेज ऑफ वेट देना है, एंड यू कंटिन्यू टू राइट द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छे से आता होगा, सीधा सीधा है। एंड व्हाट यू डिड, तुमने उठा करके 3 पेज सीधे उस पर लिख दिए। ठीक है, एंड यू हैव जस्ट गॉट 1 पेज टू राइट फॉर द सेकेंड पार्ट, जबकि वहां पर क्या असेस। तो दैट मीन्स ठीक है, तुम्हें इधर से तो ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे, बट ये 8 नंबर में से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू आर गोइंग टू लूज लॉट्स ऑफ मार्क्स। तो जो ओवरऑल जो तुम्हारा स्कोर होगा इट विल बी ऑन द लोअर साइड। ठीक है, सपोज तुमने इसमें से 60% भी अचीव कर लिया इस 8 मार्क्स में से, बट वहां पर तुम 20 मार्क्स ही अचीव कर रहे हो, यू हैव एक्चुअली लॉस्ट। So you have to be very careful. That is why we always should plan our answer. और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ऑलवेज मार्क प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, एंड अकॉर्डिंगली यू गिव वेट। ओके, सो डिस्कस वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो अगेन इट इज अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो एक ट्रेडिशनल इंट्रोडक्शन विल वर्क हियर ऑल्सो। So we can say that we can use those keywords like Weber presented a deductive positivist model to explain industrial location So something like this on this line introduction में include कर लो. Then coming to the main body, I would say his deductive model is based on certain simplifying assumptions. So here I'll list down those assumptions of Weber. और वेस्ट नहीं करना है स्पेस, बिकॉज आई नो कि लिखने के लिए स्पेस ही नहीं है, एंड आई हैव टू राइट मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है, so I'll write the assumptions, then straightforward I'll move on to the core and I'll talk about, based upon these assumptions, what Weber has done. Can we say उसकी थ्योरी को हम 3 steps में लिखते हैं? Yes or no? So he talks about in first step
he tries to find the least transportation cost point. ठीक है, तो पहले स्टेप में ही ट्राइज टू फाइंड द लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पॉइंट, एंड दिस लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पॉइंट, if you talk about, is based upon what? It is based upon the nature of raw material. ठीक है, मुझे यहां पर लिखना है तो मैं उस तरह से भी लिख सकता हूं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन is basically what? It is the cost of transportation of raw material and cost of transportation of finished goods. ठीक है, so it is based upon the nature of raw material, and it would become different if it is gross raw material. If it is pure raw material, then it will be different. So gross raw material में क्या होता है? The industry is located near the source of raw material, and use diagrams to explain. पूरा पूरा सेंटेंस लिखोगे तो what will happen? स्पेस खत्म होता जाएगा. So that is the case in case of the pure raw material. Industry can be located anywhere between the raw material and the market. ठीक है, market has its own pull, so very frequently what will happen? It will be located near the market, but it can also be located near the raw material. ठीक है, so you talk about this. So ये first part हो गया. So on the basis of this nature of raw material and the total transportation cost, what he has tried to do, he has tried to find out the least transportation cost point. ठीक है, then because he is using which type of system? He has used a control system. In control system, he gradually opens the system by increasing the variables. So पहले स्टेज में उसने वेरिएबल, बाकी वेरिएबल्स नहीं लिए. सेकेंड स्टेज में दूसरा वेरिएबल ले लेता है, एंड व्हाट इज द वेरिएबल? इट इज द रोल ऑफ labor cost. Role of the labor cost. And to understand the role of the labor cost, what he has done, he has drawn networks of isotims and isodapane. ठीक है, so what are essentially isotims and isodopanes? Isotims are lines joining, ये उसमें नहीं लिखना है, you will just write there isotims and isodopanes. आंसर में ये नहीं लिखना, just for the sake of you I am telling you. So these are lines joining places having same transportation cost with respect to a commodity. With respect to a commodity, a single commodity. और isodopane क्या होता है? It is line joining places or lines joining places having same transportation cost with respect to total transportation. Total transportation cost. ठीक है, so वो क्या करता है? There is, suppose this is the source of raw material, suppose this is the market which is present. So
if I locate the industry here, the cost of transportation there will be increment in the cost of transportation. So it will be 1. If I locate the industry here, there will be further increment, it will become 2. If I locate the industry here on this line, circles these are, because it was isotropic surface, so it will become 3. If I locate the industry on this line, it would become 4. If I locate the industry here, it would become 5. ठीक है, because these are isotims. ये जो मैंने blue draw किया, these are isotims with respect to raw material. Similarly, if you talk about if I locate the industry here, because you also have to transport the finished good, so the isotim with respect to finished good will be 1. Same thing, 2, 3, 4 and 5. Okay, now you can very clearly see that if I take certain points, इस point को ले लूं, तो total transportation cost कितना बन रहा है? 6. ठीक है, so it is 6 here. What is the cost here? So can we say these are the total transportation costs, because it includes both the commodities, raw material as well as finished good. Now what can happen? If I join these, it will become the isodopane. Okay, so in this manner what he did, he created a network of isodopanes. ठीक है, so essentially इसका मतलब क्या हुआ कि if suppose there was our industrial triangle and suppose there was that least transportation point, here what will happen, this is the point where the transportation is minimum. What will happen, however, if I go away from this point? Transportation cost will increase. Further away, it will further increase, and further increase. So these are basically what? These are isodopanes. So several such isodopanes he drew. Okay. Now very important thing is, in his assumptions what he did, he had assumed that the location and the price of the labor is fixed and it is not present everywhere. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि सपोज हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल के बेसिस पर ये लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट मिल गया, बट क्या मैं कह सकता हूं इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑल्सो द पॉइंट वेयर लेबर इज ऑल्सो चीप? ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री क्या है? इट इज transportation cost plus labor cost is also one of the factors. That means even if labor cost is increasing, but I am able to save in the, even if transportation cost is increasing, but I am able to save in labor cost, still I am making profit. Okay, so definitely that means industry can shift away from the point of least transportation cost. ठीक है, despite that a point will reach where the savings made in labor cost
will become equal to the extra expenditure of ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ठीक है, तो यहां ये जहां पर होगा इट कैन हैपन हियर, यहीं पे हो सकता है फर्स्ट आइसोडोपेन के साथ ही, सेकंड के साथ हो सकता है, थर्ड के साथ हो सकता है. वेर एवर इट विल हैपन, इफ आई गो बियॉन्ड दैट, दैट मीन्स क्या होने लगेगा, आई विल बी हैविंग लॉस नाउ. ठीक है, सो दिस आइसोडोपेन वेयर this phenomena is taking place, this isodopane is referred to as the critical isodopane. ठीक है, it is essentially referred to as the critical isodopane. So based on the savings made on the labor cost, industry can shift away from the point of least transportation cost, but it will always be within the critical isodopane. ठीक है, so this is his second. Then third, tendency towards agglomeration. Tendency towards agglomeration. So industries, suppose these are the critical isodopanes of the given industries. So he finds that there is always advantage in agglomeration. If industries are located near to each other, there can be several type of advantages. And वेबर का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव क्या है, रिमेंबर वेबर्स थ्योरी इज अ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी. और क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज कौन सी होती हैं, विच आर बेस्ड अपॉन द लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल. ठीक है, सो फॉर दीज थ्योरीज प्रॉफिट इज मेड बाय डूइंग व्हाट, बाय सेविंग द कॉस्ट. ठीक है, सो व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट एग्लोमरेशन एडवांटेज, his basic idea is that if industries agglomerate near each other, they will be able to save cost. ठीक है, लाइक यूपीएससी इंडस्ट्री यहां पर है, साथ में उसकी वजह से एग्लोमरेशन ऑफ फोटोकॉपी इंडस्ट्री हो गया, तो व्हाट हैज हैपेंड, द कॉस्ट ऑफ फोटोकॉपियर हैज रिड्यूस्ड. So that is several advantages of agglomeration. So where there is overlapping of this critical isodopane, this will be the place where there will be agglomeration of industries taking place. ठीक है, so this is the tendency towards agglomeration. अब obviously you can understand कि ये पूरा का पूरा लिखना 2 पेजेस में with the diagram it is challenging. ठीक है, that is why I was saying use the diagrams here, write less. ठीक है, हर के लिए एक एक 2 लाइन से लिखने, ज्यादा लिख ही नहीं सकते. देन अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस भी था. ठीक है, सो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस टू राइट, बट स्टिल कुछ चीजें लिख सकते हैं. वन थिंग वी कैन डेफिनेटली से दैट इफ वी लुक इनटू द वेबर्स मॉडल, वेबर्स मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कैन वी से इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिविस्टिक अप्रोच. ठीक है, सो वहां से शुरू कर सकते हैं. वी कैन से दैट इट इज एन एग्जांपल of positivism and is thus based upon certain simplifying assumptions. ठीक है, and from here I can say this is the reason. अगर मुझे इसको एक्सपैंड करना है, एक आध लाइन लिखना है, तो एग्जाम्पल देकर के I'll talk about how in reality there is hardly a rational man. ठीक है, in reality there are no such isotrophic surfaces found. तो एक दो पॉइंट लिख दिया. Then I'll say this is the reason
reason why the relevance of Weber's model in contemporary times is mixed. ठीक है, सो उससे मैंने क्या किया, दूसरा जो क्वेश्चन था उससे जोड़ दिया, एंड आई हैव प्रोवाइडेड अ लिंकिंग स्टेटमेंट. और बाकी क्रिटिसिज्म जो मुझे लिखना है, आई कैन राइट विथ द एप्लीकेशन पार्ट विच आई विल बी डूइंग. ठीक है, सो अब मुझे एप्लीकेशन या रेलेवेंस लिखना है. कैन आई से अगेन द फॉर्मूला दैट आई विल बी यूजिंग इज द 3 प्रिंसिपल्स विच ही हैज गिवन. वो तीनों प्रिंसिपल्स का रेलेवेंस इवैल्यूएट कर लेना है, दैट इज द थिंग. ठीक है, तो आई विल टॉक अबाउट relevance of least transportation cost principle. Least transportation cost principle. ठीक है, तो कैन वी से पहले हम लिख देंगे कि व्हाट इज द रेलेवेंस. डू वी फाइंड दैट दिस मॉडल इज स्टिल रेलेवेंट in case of which type of industries? Heavy manufacturing industries which are using such gross raw materials. ठीक है, so they are still heavy manufacturing industries which are using gross raw material. Like for example, I can take example of iron and steel. ठीक है, इंडिया का एग्जाम्पल प्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक कैन वी से हियर इफ यू टॉक अबाउट लाइज द झरिया कोल माइंस. इफ यू टॉक अबाउट हियर देयर इज सिंगभूम आयरन और फील्ड्स. ठीक है, देन सो इंडस्ट्री हमें कहां पर मिलती है. डू वी फाइंड द इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड हियर इन जमशेदपुर? यस और नो? डू वी फाइंड द इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड हियर एट बोकारो? ठीक है, सो क्या यहां पर वो ट्राइंगल बन रहा है? दिस इज एसेंशियली योर मार्केट विच इज कोलकाता. ठीक है, so we do find that there is application in understanding the pattern of such industries. ठीक है, very similarly और भी examples ले सकते हो. Like tell me, can I take the example of jute textile industry? It follows the same principle. Can I take the example of sugar industry sorry, again it follows the same principle. So एक दो variety of industries के example लेकर के I will write that the model has still relevance when it comes to application of the least transportation cost principle, no doubt about this. However, can we say that this relevance is still limited? ठीक है, it is still limited. And why it is limited? Because in Weber model, what he has essentially done, he is talking about the transportation cost. He has neglected many other costs. Like for example, cost of finance, land rent, many type of costs he has neglected. Even in case of, if we just take the case of transportation, tell me, can we say number of things are happening? Like for example, one thing which is happening, the things which are changing with the increase in technology, 2 important developments have taken place. One very important development क्या है? Can we say raw material use efficiency has increased? ठीक है,
Second very important thing which is taking place is transportation technologies have also increased. Transportation has become comparatively more cheaper now. Okay, take the example of development of electricity grid. With the development of electricity grids, can we say many industries which are not so much power intensive, can they be decentralized? Obviously, yes. Before they had to be located near coal or such kind of source where there was always availability of power. Okay. So again, what we finding? There are limitations which have emerged in the model, even in the least transportation cost principle. Although we can say when it comes to the heavy manufacturing industries, there is still high applicability. और भी एग्जांपल्स ले सकते थे एप्लीकेबिलिटी का. मॉडर्न टाइम्स में अगर हम एप्लीकेबिलिटी की ही बात करें तो आयरन एंड स्टील में बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है. आयरन एंड स्टील में एक नया पैटर्न एमर्ज हुआ है इंडस्ट्रियल लोकेशन का, एंड दिस न्यू पैटर्न इज पोर्ट बेस्ड लोकेशंस. ठीक है. So when the industries are shifting, like for example, you can understand Visakhapatnam is a good example. Port based location की तरफ shift हो रही है. Again, why it is being done? To save on the transportation cost. Visakhapatnam में है because why? We are bringing cheap coal from Australia. ठीक है. So again, you can give example. वो भी एक modern example हो सकता है. ठीक है. So again, it is limited. So we can write a para on the transportation cost principle. Then moving on to other factor, it was the labor cost. ठीक है. In recent times, जैसा अभी हमने बोला, because of increase in technology, other factor costs of the industries have reduced. Cost of raw material में भी कमी आई है because efficiency बढ़ गया है, and transportation cost में भी कमी आई. इसका मतलब क्या हुआ? Can we say other cost का percentage बढ़ जाएगा? शेयर जो है other cost का बढ़ जाएगा, and one major cost is what? Labor cost. ठीक है. So today we find very importantly that the significance of the labor cost has increased. Significance has increased. ठीक है. One important change has taken place. This combined with the phenomena of globalization and liberalization. ठीक है. Now developing countries, if you talk about, they also have adopted globalization and liberalization models. ठीक है. So in such a scenario, now the critical isopropane, which was talked about by Weber, it is no more national. It has become what? It has become international. ठीक है. And thus industries are now shifting, manufacturing industries are shifting even in other locations which are international locations. Can we say very good example of this is made in China? The phenomenon of made in China is a very good example of the labor cost. ठीक है. So again we can justify about the labor cost, and not only China, Southeast Asia and so many industries have shifted towards this. So that is essentially explaining the shifting of the industries. There is no doubt about that. In fact, इसी phenomena को हमने क्या बोला था? We called it as the delocalization of industries. So it well explains the delocalization of industries. ठीक है. बट फिर मैं इसको काउंटर भी करना है मुझे. So I can counter that if we look delocalization from the perspective of Weber, it becomes too simplified. Delocalization is outcome of multiple factors and not just the factor of labor cost. ठीक है. It is not just factor of the labor cost. It is
आउटकम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो वो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लाइक वन ऑफ द फैक्टर्स इज दैट ग्रोथ ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की थी, इंडिया की। तो व्हाई इट शिफ्टेड इन इंडिया? Because there is huge demand to cater to the demand which was there in India. ठीक है? So very clearly, industrial location is not just function of cost, as has been visualized by Weber. It is cost and combination of cost and revenue. ठीक है? So in fact एक थ्योरी है स्पेशल मार्जिन थ्योरी। वो क्या कहता है? इंडस्ट्रियल लोकेशन कहां पर होगा? It is something like this. This is spatial revenue curve and this is spatial cost curve. ठीक है? So can we see that this is the place where the industry will be making profit? ठीक है? That means industrial location किसके बीच में होगा? Can we say between, should be between X and Y, depending upon other factors. So it is not just the cost, it is also the revenues. In fact, in present times, revenue has become a more dominating factor. ठीक है? So we have moved away from the era of Fordism to the era of post-Fordism. So today what has happened? Revenue maximization approach is a more dominant approach in the location of industries. ठीक है? So that is one factor which is there. और भी factors हैं why industries are shifting. Like one important factor is behavioral factor. तो behavioral theory भी कहता है इसके ऊपर कुछ। बिहेवियरल थ्योरी कहता है कि बिहेवियर ऑफ द फर्म्स ऑल्सो डिटरमाइंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है? वन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दैट इन रिसेंट टाइम्स व्हाट वी फाइंड दैट देयर इज ग्रोथ ऑफ एमएनसीज। ठीक है? एमएनसीज क्या होती हैं? दीज आर वेरी लार्ज फर्म्स विथ ह्यूज फाइनेंशियल कैपेसिटीज. And since they have huge financial capacities, can we say their risk-taking behavior will be higher than other firms? ठीक है? And because of this risk-taking behavior, they are venturing into new areas, new countries. That is also leading to what? The phenomena of delocalization of the industries. ठीक है? और भी reasons हो सकते हैं, like Marxist. अभी मैंने बताया था what was the basic idea of the Marxists? Shifting of the industries, it is also to save in the labor cost. It is essentially done. So basically what they are talking about is that when you are talking about labor cost, ठीक है कि saving labor cost के लिए कर रहे हैं, but Weber has done what? He has neglected the role of political economy. He is silent on the role of political economy. He is not talking about the influence of labor unions etc. in taking of these decisions. ठीक है? So again जो सेकेंड पॉइंट है उसमें हमने पहले सपोर्ट किया, फिर उसको क्रिटिसाइज भी कर दिया कि हाउ इफ वी जस्ट लुक फ्रॉम वेबर्स पर्सपेक्टिव इट इज टू सिंप्लीफाइड. देन कमिंग टू द थर्ड आइडिया, दैट इज दैट ऑफ एग्लोमरेशन. एग्लोमरेशन. सो एग्लोमरेशन की अगर बात करें, कैन टेल मी, कैन वी से दैट if we look at the map of the world even today, industrial map of the world,
do we find that industries are not evenly spread in space? Yes or no? Do we find that there is phenomena which we call it as industrial regions? Formation of industrial regions. यहाँ पर major regions बनेंगे. These points are other industrial regions which are there in the world. Can we say in formation of an industrial region is essentially outcome of the phenomena of agglomeration? ठीक है. So agglomeration का manifestation क्या होगा? Space में there will be formation of industrial regions. So a look at the world map about distribution of industries clearly reveals that the Weber's idea on agglomeration is correct. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. But can we say कि Weber's idea, however, is correct, but it is incomplete? He has just talked about advantages of agglomeration. Can we say there can also be diseconomies or disadvantages of agglomeration? ठीक है, there can be diseconomies or disadvantages of agglomeration. So अभी हमने एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले. If there is agglomeration, too much agglomeration has happened, can we say there will be congestion taking place? And because of that congestion, many industries would try to flee that area because of the problems which will be associated. Agglomeration हो गया तो उससे costs बढ़ जाएंगी. ठीक है, like land rent बढ़ जाएगा, लेबर के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा. ठीक है, लेबर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी. Other type of costs can be added, like for example pollution tax. ठीक है. So again what is happening, there can be also diseconomies of agglomeration. So here again what we find, his idea is relevant but incomplete. For example मुंबई का एग्जाम्पल ले सकते हो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. The distribution of cotton textile industry, it has fled the region of Mumbai. ठीक है, so that can be taken as an example to explain it. बंद करते हैं आज के लिए. I am also tired. I think you people are also. So this topic we will continue on Monday, because Saturday को we will be doing the paper 2 physical setting.